Hello everyone. So let's get start with the Tableau dashboard. So basically, this is the mall data set. This is the mall data set. So if you see here, we are having row ID, order ID, order date, the date when the order has been placed, shipment date when the order has been shipped, shipment mode, these many shipment modes, customers, ID, customer name, segment, which kind of segment it is, whether consumer segment, corporate segment, home office segment. Country, you can see the country is United States. City is this, state is this, region, product code, category, subcategory, product name, sale, quantity, discount, and profit. So these many things we are having. This is the written data, and this is the table data. So if you will see here, this is the dashboard. Yesterday we have just imported our file. So today, first of all, what we have to do, we just have to drop orders file, order sheet to the here. Now if you will see in the Excel, we will be having 9,994 rows and 21 columns. Here if you will see 21 columns and 9,994 rows. Now if you will see here, please share the Excel file with channel. Prem, I will do the same. Abhi, as of now, please focus on my screen. At the end of the class, I will share the sheet. Okay, ma'am. Yeah. So if you will see here, you can see this signs above. See this hashtag, this ABC, this calendar light. Here it's global light. What it is exactly? Basically, this will ultimately show you the data type. Here it will show you this is a number data type. Here it will show you that it is a string data type. Here it will show you it's a date type. Here it will show you the location, whether it is country, state, region, likewise. So it will ultimately show you the data type. And now if you will see here, in the Excel we can see, we can filter out. For example, in the Excel if you will see, in the segment region, you will be having three segments: consumer segment, corporate segment, and home office. If you want to only look for the consumer segment, you have to do like this and you will see 5,191 rows. But while you will uploading the file, you have to, if you want to work only on this consumer segment, you don't want to work on the whole data set, you want to work only the consumer part. So what you have to do, if you will upload this file and start making the dashboard, at that time you will see you have to make changes in every sheet. But in terms of this, can you see this part, the filter part? You will get this filter part by itself. So you just have to add. Here you need to add. This is the column name basically. We just go to the segment part. Okay. And then I want to see only the consumer or the corporate.
For example, corporate we have done. Okay, okay. See, 3020 rows. Now you will see here 3020 rows out of 9994 records. Now if you want to put another filter on it, just add, you want to put filter on the region. For example, region, you want to see only the east part or central. Now you will see, you will be only dealing with the 1550 rows, 50 data. Okay, you do not need to work on the 9994 data. If you want to work only the corporate segment and east and the other region, you just have to make the filter from here and you will start working on that sheet. And if you want to remove that, then just simply remove, tap, remove, and then okay. See, 9994 rows. Now let's come to the sheet, this sheet. So here if you will see, we have two options. So in the sheet 2, if you will see, so these many kind of tables we are having. Tables, you mean tables as in you can see the major name. What does it mean by the major name? Major name means this is basically it's in blue in color and you cannot do any numerical operation, mathematical operation into this. This is the actually part of this thing. And this is the measure value. See, this is the measure value. This is green in color. This is green in color. So in the measure value, you can see that you can have a mathematical operation. But in the measure name, you cannot have any mathematical operation into this. Okay. So let's, in the show me, you will be seeing these many charts. You can do this thing. In the different, in Tableau even, in Tableau or in Power BI even, you will, sorry, in the Tableau paid version even, you will see these many charts only. But while we will be importing variables in the rows and columns, only specific charts will be get enabled to us. Okay, that we can use it. But by doing the experiment, we can make different kinds of charts out of these charts only. So if I will show you one thing, sales dashboard. For example, let's see, or you can say Tableau dashboard. Let's see this one. This is the dashboard you want to create. So for example, if you want to create a dashboard, in the Power BI, what you can do, you can create this whole dashboard in one sheet. But in Tableau, what you have to do? You have to create these many sheets. You have to create these many different sheets. And then after in the dashboard part, you have to add those dashboards. We will see later. So now you will see, for example, here you will be saying 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 charts. So you have to create 6 different sheets. So for example, here if you will see, so for example, this is the whatever the variables I had
in my Excel, row ID, order date, all the variables are appearing here. These are the variable name and these are the data type. For example, shipment date. You want to change the data type. Change data type. For example, you want to in the string. See, it has been changed to the string. Now you want to again change it. Change change data type and data date. Okay. So likewise, we can change the data type even. Now, if you will see here, this is the, if you will see the subcategory. So you will have to keep it here, subcategory here. See, if I will select any particular variable from here, for example, I put the sales here, sales here. So can you see this? That the sales, I have not provided anything that I want to do the sum, I want to do anything apart from this abbreviation function. Okay, but it will ultimately do the sum of that sales. Okay, because this is measure value where the mathematical operation will be done. In the rows, we have put it the subcategory, and here if I put it the, if you will see, just swap it, if you will see, just a minute. If you will like this, see, it has been done like this, the subcategory. But then if you have swapped this, still the abbreviation function has been done only on the sales thing. Now if you want to, instead of sales, you want to do something else. So see, measure. If you want to, do some different kind of function here, you can see it. Like if you want to do the average. See, this is the average. If you want to do something different, like you want to do the maximum. See, this is the maximum. But by default, it will do the sum only. Sum. So, now just let it be sum. This is called as the bar chart. Now, this is the horizontal bar chart. Now, if you click on the top right corner, you can see the option show me. See, these are the different charts which are available for this. You can create only these charts from on the Tableau for this kind of data set. You know, this sounds very strange that Tableau is a data visualization tool and we have only these many kind of charts. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, only 24 charts are available. ओके अब ऐसा नहीं है कि फ्री वर्जन में कम है एंड पेड वर्जन में ज्यादा है. In the paid version you can see the similar number of charts. Okay, so but if you will see here exactly in the same manner, but this doesn't mean you can create only these many 24 charts. You can create more charts. So in order to create more charts, we have to apply the logic. Okay, so basically, तो वो हम देखेंगे slowly. अभी के लिए ये देखो कि these are the different charts. For example, you have to create this chart. See, this chart, this chart, this chart, pie chart. Now you can see there are some charts which are highlighted and there are some charts which is not highlighted. इसका मतलब ये है, by taking these two variables, I can only these many charts. I cannot create which are not enabled for these two variables. Okay.
If you want to hide it, again click on the show me and being done. Now see this option. See, this is basically the see transport. Rows into column, column into rows, rows into column, column into rows. This is ascending or descending, sorting, increasing order or in the decreasing order. Okay. Here you will see in which view you want to see. This is a standard view. This is a fit width. Width क्या है वो पूरे स्क्रीन पे फिक्स है. Fit height, height स्क्रीन पे फिट हो जाएगी. But entire view if you can see like this. An entire view it will take your entire height and entire width. This is the presentation view. See. The chart will open on the big screen, on this entire screen. If you want to come out of this screen, there are two ways. If you will see in the bottom of the screen, you can see this exit full screen option. You can do it this full screen. Okay? Or the other option is escape. See, by using the escape button, you can do this. अब मैम इसमें ओगाइव बन जाएगा. ओगाइव का भी ऑप्शन होता है. ओगाइव जो चार्ट होता है ना एक, वाइव चार्ट मतलब सपोज वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉइंट जोड़ता है ना, जैसे डॉट हाँ डॉट हाँ जोड़ के उसमें करेक्ट लाइन करेक्ट लाइन वो है इसमें हाँ ऑप्शन. वी विल सी हमें दो चार्ट को मर्ज करके वो बनाना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू राइट दैट इज अ लॉजिक बेसिकली. अच्छा अच्छा. वी हैव टू क्रिएट दैट लॉजिक. या सो लेट्स स्टार्ट दिस. नाउ you will be seeing these are the five different options here: color, size, label, details, tooltip. Let's try to understand these things one by one. First one is color. For example, you're not liking this color, you want to change the color. Simply click on the color and you can change the color. For example, orange, blue. एक तरीका तो ये है. ठीक है. Other way is go the more color and see this part. This is the RGB code. Basically, you have to give it. This is specific for different color. This is basically the HTML color. For example, you want to choose this color. See, this is the RGB code for this. Okay, and see, this is the color you have been paid. Okay. Now, if you will see here, opacity. जितनी आप ज़्यादा ये करते जाओगे, see, the opacity is been decreased. See, this is the opacity. Border. As of now, you can see no border. But if you want to see the border, see, black border. For example, this. If you want to see, get the white or the green border, see, this is the green border. You cannot see this, but green border has been done. Done. Now, I want color should change depending on the profit. So what I have to do? See, now you can see this. See, this is the towards the orange color that is the loss, and towards the dark blue that is the profit. See, and if you want to change the color, just do it. See, if you want to change this color, okay, these many things you can get it. Like for example, you want to do the green color. See, the green color has been done. Just simply do cross and see. This has been changed. And now, if you will hover your mouse on this, you can see here subcategory is phone, profit is this, and sales is this. See, वहीं पे अगर आप टेबल्स को देखोगे, सी टेबल में हम सेल्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट प्रॉफिट इज
negative. We are in the loss. So how beautifully we are seeing three things on the same thing, same chart. Okay. Double click on this. See, double click on this and you can change the color. मैम इसमें डेटा लेबल हम लगा सकते हैं जैसे पावर बीआई में लगाते हैं? लगाएंगे, अभी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे. You can do the same here. If you want to reduce the size, तो सारे बार का एक साथ साइज रिड्यूस हो जाएगा. You want to increase the size, ये हमारा हिस्टोग्राम जैसा बन गया. Just keep it as it is. ठीक है. सबका size is getting reduced in the same order. But for example, I want to increase or decrease the size depending on the profit. जिसका ज्यादा प्रॉफिट है वो ज्यादा वाइड रहेगा, जिसका कम प्रॉफिट है वो थोड़ा थिन रहेगा. तो सी, प्रॉफिट को हमने साइज में डाल दिया. एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो यू कैन सी हियर प्रॉफिट सम में आपको इधर एक बार कलर में डाला है हमने, तो ये कलर का सिंबल आ रहा है, साइज में डाला है तो साइज में डाला है. ये हमें क्या बता रहा है? द टॉप राइट कॉर्नर यू कैन सी थिनर द साइज उतना लॉस होगा, जितना वाइड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो सी, टेबल में हमने देखा था माइनस में था सी -725, दैट्स व्हाई दिस मच थिन. Now if you want to, this is the basic, you can discard this. हमने discard कर दिया. This came back to normal. Drag it and put it over here. ये मुझे रिमूव, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे रिमूव नहीं करना था और मेरे से गलती से हो गया, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, वी हैव ऑप्शन ऑफ कंट्रोल जी. सी, कंट्रोल Y, that is redo, control Z, that is undo. ओके, तो हमने कंट्रोल Y कर दिया, हमें नॉर्मल उसमें आ गया. जैसे हम कलर में दो तरीके से कर सकते हो, इधर बाय कलर सेम फॉर ऑल द रिकॉर्ड, और you are changing the colors depending on the profit or sales or something. Now the third thing comes to the label. What do you mean by the label? What do you want to print on the top of the thing, which would be visible for the all? Click on the label. These are the different options. Let's suppose I want to print the quantity or the sales. So drag the sales in the label. See. Now here if you will go, okay, go to the alignment. This is, you can say, the above, and this. Now because you are creating a dashboard, so just a minute. Now for example, for suppose you are creating this dashboard for the management. They are not interested by seeing this thing 333007. They are interested to see the round of numbers. For example, 330,000, 328,000, 223,000. Okay, so what do you have to do? That can also be done. Just you will hover your mouse on this. See, this is for label and this is for label. See, you will see one drop down button. Click on the drop down. You can see the format. See, format, and you will see here. Go to the number. There are different options you can see. For example, standard, custom, currency, custom. In the currency, even you can see which kind of currency you want to give. English, these many currencies you are having. Okay. यहाँ पे let's suppose I want decimal should be
single, and display unit, I want to show it in thousands. Okay, to see. Okay, and I do want to see the decimal to see. Okay, अब do see. Now this is how you are adding the labels. If you want to show this, अगर आप यहाँ पे ऐसे जाओ, see, you will see. If you will see, now if you want to click on this show marks label, आप इसको फिर से ये कर दो तो ये वापस से आ गया. ओके, यहाँ से यू कैन चेंज द अलाइनमेंट. सी टॉप सेंटर, for example you want to create it in a, for example this is not, see, if you want to do it like this or you want to keep it straight. Okay, want to do the left thing. Yes, first thing what's not doing. The more experiment you will do, go to the labels and play with these different options. Now, मैम वो wrap क्या है, ऑफ करिए तो एक बार. sorry, वो वर्टिकल में wrap है ना. what do you want to do by that? वो ऑटोमेटिक के नीचे जो लेफ्ट में है ना, That ऑटोमेटिक. I got. ये नहीं ऊपर वाला इसके, ये वाला, Yes. ये. हाँ, ये तो आप देखोगे ना, ये यहाँ अच्छा, पे जो ये निकल रहा है, ये राख हो जा रहा है उसके हिसाब से. ये वो उसके साथ उसके ठीक. वो डायरेक्शन चेंज हो जानी बेसिकली. और उसके ऊपर नहीं आ पाएगा ना, बार के एकदम ऊपर नहीं आ एक्चुअली पाएगा. आ जाता है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग यू कैन हाँ, सी वो है. लिमिट क्रॉस. अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो वो हो जाए. वो आई थिंक वो बहुत ऊंचा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गेटिंग दिस. फॉर एग्जांपल आई डू नॉट वांट टू सी ऑल द थिंग्स. ओके, आई वांट टू सी ओनली द min max. So what you have to do? Min max only. So see, minimum, this is the maximum and this is the minimum. यहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं बिकॉज यहाँ पे हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थिंग एंड वो हमारे लिए इनफ है स्पेस इतनी. बट देयर वुड बी सम डिफरेंट चार्ट जहाँ पे हमें स्पेस की थोड़ी डेफिशिएंसी होगी, वहां पर हमें वो चीजें करना पड़ेगा. नाउ कम टू द टूल टिप. इफ आई एम होवरिंग द माउस ऑन दिस बार्स, three things come in. Subcategory, one is the profit, one is the sale. Okay, now if you will see here, if you want to, instead of profit I want to write profit of category. Profit of category. Okay, see, profit of, so basically in the angular bracket which is present, you cannot change this value, you can change only this value. In the angular bracket, that is a dynamic values that will be calculated ultimately, but this is, these three are the static value what you can change. So see, so if you will see here now, subcategory, profit of the product and sales. Let's suppose I do not want to see the sales. Now just remove the sales and then okay. See, sales has been removed. In this way, you can add or remove these things. Okay. यहाँ पे since we have brought
you will see here, for example, let's go to the level alignment. Okay. So सबसे बड़ा biggest challenge है सबसे बड़ा challenge that you will facing in the Tableau or in the power in the Tableau majorly the space. Okay, not in terms of the space ये GB में लेगा या कुछ ऐसा. Okay, for example अगर आप यहाँ पे वो कर रहे हो तो सी शीट 2 अपने आप से यहाँ पे अभी वो अवेलेबल हो रहा है. ओके, बट यू विल सी हियर अब वो कितना छोटा सा दिख रहा है. तो यू हैव टू मेक योर चार्ट लाइक वाइज जिससे कि वो आपका चार्ट बहुत ज्यादा स्पेस ना ले, इररिलेवेंट स्पेस ना ले. तो व्हाट वी विल डू, अगर हमारे पास सेल्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वी कैन सी द सेल्स अबव दिस बार्स. तो दिस एक्स एक्सिस this y-axis is redundant. I can right click on this. One is edit axis and show header. Okay, just do this. This is done. Okay, but if you want to edit axis, if you will do, if you want to change the name, okay, sales of the product. Just process. See, sales of the product. Now just do the show header cross and you will get it like this. Do come here, show header, and again it will show you like here. Now this is the sheet 1. I want to give the name bar chart here. Bar chart. Automatically यहाँ पे वो नाम आ जाएगा. See, bar chart. Now if you want to do it, see, if you want to increase the size, bold, apply. See this. This is the thing. Now if you will see background, if right click on this, do the format, you can do the changes here. You want to remove, go to the line, grid line, it already been done. For example, if you do this or this, see the grid line you want to see this like this way it has been. So the grid line has been created, but you don't want to see any grid line, just do the this side. If you want to change the worksheet color, okay, see header का ये है, sheet पे if you will go, this is the worksheet color you want to change it by this thing, you want to change it by blue, you want to change it by this. तो गाइस बेसिकली हमने यहाँ पे ये चीजें इसलिए ये किया है डिस्कस सारी डिटेल्स बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड विद द चार्ट वी विल गो लिटिल क्विकली बट this I have told you reason being I want to show all the functionality, how we are using, how we can change the background color, how we can rename the thing, how we can do the labels and everything so that you guys can able to understand. Next is see next is if you will see just a minute. If you will see in the first chart, see these kind of things you can get it.
Guys, if first chart में कोई confusion है, do you guys having any confusion in this first chart, or this is clear? Because moving forward, we'll go little bit faster. So this is clear. Yes, ma'am. Okay, great. So now, if you will see this thing, let's discuss about the next chart, which is the hierarchy basically. Do you guys understand by the hierarchy? Do you guys understand by hierarchy? ऑर्डर को कहते हैं रैंक. Exactly. The order. This is we have discussed in previous classes also about the hierarchy. So let's discuss about the hierarchy first. So basically, in the hierarchy, if you will see, see, if it is month, year, it will quarter, month, date. This is called as a hierarchy. This will be doing in the same sheet. Let's see how. So we have to so if you will see here, we just have to, let's suppose I have the date variable. This is the date variable, order date. See here. So now if you will see, this is the date variable you have to see. This is what you are seeing here, the plus sign. See, quarter wise, if you expand it month wise, expand it day wise. Okay, this is the year, this is the first quarter, this is the January month. See, in the second quarter we are having these many. Okay, and the date, this is the date. Now I want to take the sales here, and always try to see. So if you will see here, see, this is the line chart. If you want to create an entire chart, entire view, see, entire view. Up see here and here. See. Now I want to see the month-wise data, not the year-wise data. Now what I'll do, I'll just expand it. It will show you the quarter-wise. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Okay? But so clearly we can see that it shows the seasonality. Seasonality matlab the quarter 1 में sales कम थी, so slowly increase to the quarter 2, quarter 3 and then quarter 4. See the sales. This is something which is the time series forecasting concept. जहाँ पे we want to understand company का business क्या है. Okay, so for example if I talk about the AC, कि AC की सबसे ज्यादा सेल कब होती है, तो वो विंटर्स में होती है. ठीक है, sorry, अगर if you will see this, and if you want to take an example of the AC, okay, AC की सबसे ज्यादा सेल होती है समर में. ठीक है, विंटर में उससे कम की सेल होती है. And the same process follow for all the business things. Okay, but if I expand this the month wise,
I can see the day wise. I want to see only the month wise. Okay. See. See. This is the month wise. January, February, March, April. This is the month wise. Here is the twig. मेरे पास डेटा तो था 4 साल का. uh, I have the data for 4 years, but here I can see the data is coming only for 1 year. Actually, this is not the 1 year data. This is the consolidated data. चारों साल के जनवरी में this was the sale. Okay, चारों साल के फरवरी में this was the sale. March में this was the sale. April में this was the sale. Now, if what the requirement is, if you want to show the consolidated data, okay, if you want to see the consolidated data, then this is fine. And now if you want to see month and year wise, okay. Now, different options you can get in. Year, quarter, month, day और year, quarter, month, day. ठीक है. जो पहले वाला है, that's basically the consolidation, and this the second wala is basically telling you the month wise. So for example, if you will do the month wise, see. See, this is the thing. Month of order date. And if you want to do something different, see, quarter wise, quarter, putting the quarter to this. See, likewise, you can do this. Just do this month wise, and this is like this. And if you want to hide this part, just hide this because this is of no use. See, we can show you the sales like this month wise. Now, यहाँ से if you will see the color, change the color, see the color. If you want to change the size, see, जितना बड़ा करोगे उतना ठीक होता जाएगा. If you want to bring some label, sales on the label, see, ऐसे आ जाएगा. I want to convert it on the millions, billions format. See, number, and this is standard, and this is something like this. You can do this. For example, this, and then unit में आपने लगा दिया millions, or you can do the thousand. See, ये हो गया आपका इस तरीके से. So likewise, you can do this. जो भी changes if you want to do, जैसे कि हमने बार चार्ट में किया, ये सारे changes आप यहाँ पे कर सकते हो. Now, if you want to give the name of the sheet, that is the line chart. This is how you can create the line chart. Now, let's suppose यहाँ पे तो already हमारे पास hierarchy थी. Now I want to create my own hierarchy. Okay, so how you can do? Before going to the hierarchy part, let's see, we have different charts available. I want to create pie chart. Okay, I have the region. इसके लिए I have the region. So if you will see region, see, Central, East, South and West. Okay, I'll bring the sales here. See, by default ही आ रहा है, but हम pie chart you can see pie chart also. बहुत छोटा आ रहा है. Just do the entire view. See, pie chart. So this is. So if you will see this, see region wise like that. See. Now, what it is telling me, central region के लिए we have the this color. See,
here central region के लिए we have this color. See, now I want to bring the labels here. I want to bring the region name in the label. I want to bring the sales also in the label. See, but pie chart में तो sense तभी करता है when I can see the percentage by distribution. ऐसे नंबर देखने का कोई फायदा नहीं है. I want to see the percentage. कि like 70% is coming from this, 20% is coming from this. Sales. Take the sale, the label sales, drop down, quick table calculation. Okay. One option, table calculation. Now here if you will see the percentage total. See, this is how you can do this. This will automatically will convert the percentage into the number into the percentage. The maximum revenue has been generated from the west region. Then it is from east, then central, then south. Now let's suppose the clients. Let's suppose the client say, I want to see the exact number. I want to see the exact number also. So what you can do, you can drag the sales again in the label. So what clients want to see the exact number also. But अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने एक परसेंटेज दिया, that's why you can see this triangle sign here. That means यहाँ पे आपने एक कैलकुलेशन दिया है. If you want to remove this, आप यहाँ से remove कर सकते हैं. If you want to edit it, you can remove it. Now client says, now I don't want to see this way. I want to see south, then the numbers, and then the percentage. Okay. So go to the label. Just a minute. Go to the labels. This. अगर आप यहाँ पे जो भी करना है, आपको सबसे पहले रीजन देखना है. Control X. I don't want to see this central and state. यहाँ में मैनुअली चेंज करना पड़ेगा. हाँ, ये आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा. अगर क्लाइंट ने आपको ये बोल दिया कि उन्हें पहले रीजन देखना है, देन ही वांट टू सी द सम ऑफ द सेल एंड देन ही वांट टू सी कि क्या परसेंटेज का वो है, so you have to do it manually. See, region, this is the total sale and this is the listing. अब जैसे कि मैंने बताया कि टैब्लो में हमारे स्टोरेज स्पेस का थोड़ा वो होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल स्टोरेज, बट हमारे डैशबोर्ड पे जो स्पेस होती है. So what you can do, you just simply can do like this. See, the same line you can do like this. Like, see, in the same line आपका ये आ गया हमारा ये total sales and this is the percentage of the sales. So if you will see in the dashboard, see, okay, so likewise we can in the that will be from later. Okay, now for example, now next is this is a pie chart. See, next chart. जैसे आप रीजन पे क्लिक करोगे, सी राइट क्लिक करोगे, सीधा हायरार्की. ठीक है, हायरार्की.
For example, right click here, hierarchy region, create hierarchy, hierarchy underscore H. If you want to give the new name to the hierarchy, okay. So this is the region hierarchy. Here it is created. In this region, if in the hierarchy, if you will see, we will be having only the region. So below the region, you want state. Below the region, you want state. See, below the state, you can add city. It is the city. You can create above the region the country also, but country is only one, United States. That's why you do not need to do that. So if you will write it here, state. Expand it state-wise. Expand it city-wise. So in this way. Okay. This is the east, the central region. Then it is the east region. Likewise. नहीं तो जैसा नीड रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं Sorry, who's this? Yes, मैम sorry. जैसा नीड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हाँ, चेंज एग्जैक्टली जैसे आपने एक हायरार्की बना लिया अपने एंड से ही, तो आप जी उस जी हायरार्की के बेसिस पे यू कैन क्रिएट इट मल्टीपल वेज. ओके नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट सेल्स आपने डाल दिया हियर एंड दिस इज प्रॉफिट. अब यहाँ पे आप शोबी में जाओगे तो दीज मैनी चार्ट इज इनेबल. फॉर एग्जांपल दिस इज द रिपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर. बेसिकली you want to only see by region and state, just remove the city. See, city को हमने just drop it here. See, this is the profit and this is the sales. Okay. So this is basically called it as a अगर ये हायरार्की ना होती तो हम कैसे करते. See, अगर हम सिर्फ हमारे पास ये चीज ना होती तो हम कैसे करते. हम सबसे पहले क्या करते. I'll drag the state, I'll drag the sales, I'll drag the profit and go to the first table and I will be seeing the this thing. Sort करना है, the ascending order, descending order, we can do it here like this. Okay, all right. So basically, this is the benefit of using a hierarchy. Now, let's try to talk about the filter, which is very important part. Some time back, we have applied the filter here. We can apply the filter here also. Now, filter can be applied in the sheet level also. Just a minute, guys. Just a minute. Okay. So basically, now here if you will see in this, if you will see, जैसे कि हमने यहाँ पे एक अप्लाई किया था फिल्टर, how we can do it here. Now, how can we apply filter in the sheet level also? Let's suppose I want to apply the filter on the region. जैसे यहाँ पे filter, यहाँ पे you can apply the filter. Okay. Let's make a different chart for this. This is the text table. Just a minute, guys. Okay. This is the
text chart. Let's create other two different things. Let's create a different chart. Separate chart for this. Let's go to the pie chart and we want to apply the filter for the region. So we can do simply, I have 4 regions. See, these many filters we have. Click on apply. Okay. See, if you click on the, see, edit filter and show filter. If you write the show filter, see, this is the filter you got. If you want to see like this, central, see, this is the east, see. अभी हम देखेंगे once we create the dashboard how we are using it. So now next is, let's suppose, so guys, any doubt till now? I will strongly recommend immediately after this class, just try to get exposure in Tableau, okay? Try to do some experiment. जितना खुद से experiment करोगे उतना अच्छा होगा. And you have very good YouTube channels also. थोड़ा सा explore करो आप लोग वहाँ पे भी and see those things. And I also share some good YouTube links. The state variable. Let's talk about the state variable. State is the location. All the charts are disabled. For example, see, all the charts are enabled, disabled. As just I put the state variable here. See, these are the location charts. See, see, this is called as the symbol map. Okay, and this is one chart is this. Okay, and one is this. Ideally, आपको यहाँ पे values दिखनी चाहिए थी, but this is an open source map. That's why you cannot able to. So यहाँ पे you will be seeing there are 15 values out of unknown geographic location. So in my Excel data, if you will see, I have the state column. See, these are different states. इस स्टेट को मेरा ओपन स्ट्रीट मैप है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है? बिकॉज इफ यू क्लिक ऑन दिस, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन द एडिट लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिया लिखा है, बट हमारा किस चीज का है? यूनाइटेड स्टेट. स्टेट. ठीक. ओके. ठीक. नाउ यू कैन सी दिस. अभी सारी स्टेट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, एक तो नहीं कर पा रहा बिकॉज वो नल वैल्यू है. दैट यू कैन इग्नोर इट. ठीक. 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 Now you can do so many modification in this chart. Okay. Now if you will sales, see, no, not the sales. Okay, wait. In the size, for example, you want to see कि जहाँ पे sales ज़्यादा हो, I want to see the this points bigger, and जहाँ पे sales कम है वहाँ पे हमें छोटा देखना है. What do you want to see? Like this. See, कैलिफोर्निया में सेल्स इतनी है, न्यूयॉर्क में इतनी है, एंड दीज आर मैनी डॉट्स जहाँ पे सेल्स हमारी कम है. तो बबल साइज विल बी मोर जहाँ पे सेल इज लेस, जहाँ पे बबल साइज इज मोर वहाँ पे सेल इज हाई. यहाँ इज इट ओनली दिस. दिस. इफ यू वांट टू चेंज द साइज, सी, यू कैन increase the size. See, in this way you can play around with these values also. This is the first thing. Second thing, if you see
this chart is very weak. Weak in the sense very बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है. तो इसके लिए दे आर मल्टीपल ऑप्शन हाउ यू कैन ब्यूटिफाई दिस चार्ट. कैसे? So on the top panel you will see the map. See, map. And now if you will see the background, different options. Light option. Okay. Normal version. Dark version. See, गूगल मैप पे जैसे नाइट वर्जन होता है, दैट इज समथिंग लाइक दैट. स्ट्रीट व्यू. सी, दिस इज द स्ट्रीट व्यू. सिमिलरली आउटडोर व्यू. सी, and this is the satellite view. See, this is the satellite view. Let's keep it simple only. Let's keep it light only for now. Now if you see, now if you will see map option, one is the background layer. हम कितने भी डीप लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है. See, we can see the rivers also. See, अगर वो चीजें देखनी है मुझे, so what we can do, we can background layer, you will see will different options will be appear. See, जैसे terrain you want to see. अगर ये आप मे भी आप लोगों के एंड पे, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल टू यू ऑल नो, बट you will try in your machine, you can able to see this. See, without coastline, with coastline. If you want to see the street, see, see, light countries, see. जो जो आपको देखना है, जिस लेवल तक का देखना है, यू कैन डू दिस. जितना आपको हैवी दिखाना है चार्ट, यू कैन डू दिस. Since this is a free version, so it has the limitation. Now I want to bring the labels also. Now I want to, since this is a free, so as we can see this here. Now I want to bring the labels also. Sales को हमने क्या किया, labels में ले आए. See, labels, and हमने state को यहाँ पे pull कर लिया. See, this is how we can creating the first map, which is the symbol map. In the same way, I want to try the different map. Okay, तो हमने क्या किया, state हमने ले लिया, sales हमने ले लिया, कलर में sales पे देना color. Here, what how many kind of charts we can do, we will create this chart. See, this chart. Now if you will want to print the state, see, I want to bring the sales. See, in this way you will observe one thing, that for some reason state the values are not appearing. Okay, see, यहाँ पे डार्क है, वहां पे सेल्स ज्यादा है, यहाँ पे लाइट है, वहां पे सेल्स कम है. ओके, बट बेसिकली सी, दिस इज द सेल्स. यहाँ पे लाइट है, वो वीक है. नाउ इफ यू विल सी हियर, if you observe here, there are some space which are not appearing at all. Okay, see, light है. If you will see in your system, you can see, you can Virginia लिखा ही नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है. नॉर्थ कैरोलिना कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है. Why? Because if you click on the label, you have one of, see, you will have the option of allow label on overlap. See, by default Tableau will not overlap the values, but अगर आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो see,
It will overlap also. See, मैम हम फॉन्ट साइज एडजस्ट नहीं कर सकते? कौन साइज हम कर सकते हैं साइंस के साइज में देखती ठीक ठीक है। अच्छा ओके। हाँ ठीक। डैशबोर्ड में हमें सिर्फ स्क्रीन नहीं मिलेगी, दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग को क्रॉस करना पड़ेगा। जो now let's suppose I do not want to show the all the values. I want to show the maximum and minimum value. Min max. See, maximum and then based on the alphabetically order. Okay. So this one is A, and I want to this, but I want to see the sale wise. But if you here you will see field, it is not being just a minute. See, this is field. See, I want to see by sales. See, California and एक और नहीं आ रही because we are having a null value. That's why we cannot see like this. उससे पहले क्या था, हमारे वो अल्फाबेटिकल वे में दिखा रहा था, फिर स्टेट वाइज था. That's why वो अल्फाबेटिकल वे में हमें visible था. That's the reason we cannot able to see like that. But if you do the sales wise, it will show you like this: the highest sale and the minimum sale. Now this is map. Now if you see here, if you see here, I have segment. Let's get the segment. See, segment and sales also. Start it in this way and make it as an entire view. Now, if I want to sales in a color, or we can do it not the here. Region को अगर हम ये कर दें, see, region wise it will show the sales. Total consumer कहीं हमको बाहर दिख रहा है ये, okay. But the point is, if you will see, this is for the consumer के लिए हमारा क्या है, ये central region के लिए sales है, ये east region के लिए sales है, this is for south region sales and this is for west region sales. Same with the corporate segment, central region sales, corporate east region sales, south region sale and west region sales. Same with the home office, central region sales, east region sales, south region sales and west region sales. So likewise, this is the state. See, this is the chart we have created. I can simply wear sales price in the label. See, अब मुझे सिर्फ ईट्स की सेल्स देखनी है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली see, likewise you can do it. Yes, सेल्स में हमने लेबल्स में डाला एंड सी, यहाँ पे हमने क्या किया, वहां पे हमने क्या किया, सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस. नाउ वी आर स्वैपिंग. ओके, तो अगर हमें put the sales in the label, I want to see only for the home office. See, see, see. So this is called as the see. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास ग्रुप चार्ट भी है, सी. बट यहाँ पे क्या है,
just because of the space, we will not consider this thing. We will be considering this chart. Entire view. See, this is called as the, this is what? This is grouped bar chart. This is stacked. This was the stacked bar chart. Stacked मतलब एक के ऊपर एक, ग्रुप को मतलब अलग अलग ग्रुप्स में है एक एक रीजन का. This is how we are creating the chart. Now, let's suppose I'm good with the creating all the charts. Now let's think this. I want to create a dashboard. Let me just delete this first. See the second one. This is the dashboard. See. So see. This is screen divided into two parts. Drop sheet here, sheet here. Second is this. This is called as the dead area. Here you cannot able to create any chart. We have to increase the drop sheet area. Okay. अब इनका एरिया कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप क्लिक ऑन दिस and increase the weight. See, it has been increased. Okay. Now in this, I can simply drag and drop, drag and drop. Yeah. Before drag and drop, you should know the two things, that is styled and floating. Styled means, for example, floating. If I talk about first, कि if I go to the floating, हम कहीं भी अगर इसको डालें तो हम कहीं पर भी इसको रख सकते हैं और हम इसका साइज वो कर सकते हैं अपने हिसाब से. Okay. But if I'm choosing the tile, it will automatically take the entire space. See, symbol, see, map, see, 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 see. Likewise only. Okay, let me cancel all this first. So most of the time we consider for the this thing, because in the floating we can adjust it by ourselves. Now let's start with the floating. Start with the bar chart. See, this is, यहाँ पे हमको ऐसे जरूरत नहीं है. Just cross it. See, next is line chart. Keep it here. Next is, let's make the, let's keep it. Okay, then now put it here. हाँ, if you will see border नहीं आ रहा है तो layout में you can go with the border and that is this, or you can go with the thin border like this. Then with this border, this, then with this border, this and done. Now we cannot select multiple graphs at the same time. In the tiled only you can do that. Now hierarchy. See, hierarchy chart. Next is text chart. Text chart. And then map. Map chart.
group bar chart. Let's do the again. See, layout, border, this, layout, border, this. अगर आप यहाँ पे भी करोगे, here also, for this also, layout, this, border, this, border, this. See. Now, in the pie chart, see. Now, if you will see, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको ये चारों दिख रहा है, ओके, ठीक, but you want to use the drop down, okay, so basically, wait, so basically, go to the chart, first, go to the chart, go to the filter, this is the filter, see, keep it here, please, for the time being, go to the chart, okay, see, you have to, see, तो आपने यहाँ पे किया, first of all, just this, filter आ गया, more option, and then you will see here, for example, here if you will see multiple value filter, uh, see, here if you will see, यहाँ पे it is not looking good, click on this, multiple option you can do with this filter, see, 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 see. Here if you will see, यहाँ पे ये it's not looking good, okay, what you can do, click on this, multiple option which can available here, see, multiple value drop down, see, all the values have been removed, only this value you can see, see. Now thing you will observe, see, for example, you will do with this, everything is available for this chart only, okay, what you can do, you just, or you want to do, if you want to select anything, you want to make changes in every chart, okay, so what you can do, apply to this, see, apply to worksheet, okay, worksheet,
on which chart you want to selected work check. Okay, on the bar chart, line chart, and hierarchy, and then press OK. So now if you are making any changes in the filter, see, only these three charts are getting changed. See, these four charts actually. See, but if I'm selecting here, see, all using this data source. So see, center, so changing happen in the all the charts. Okay, and here to the dashboard, you can drag the text here. You can give here, for example, sales dashboard. बड़ा कर लेते हैं stick, cancel align, bold, okay. ठीक, या आप अपने हिसाब से in this way you can, जो भी modification you want to do, you can do it. For example, layout and this. यहाँ पे आपको अगर ये चीज है, ठीक, इसमें गए आप, then आप इसका background color change कर सकते हो. So you want to do the background color green. Okay. Now this thing, if you will see, there is one thing, padding. Okay. See, एक ही outer padding, एक ही inner padding. See, see, see. You can see the change while I'm doing the padding. And let's see the difference between the inner padding. See, see the difference between the inner padding. Okay. So let's suppose this is the dashboard I have created. Now I am done for the day. Okay. I want to shut down my laptop. So अगर आप ऐसे ही shut down कर दोगे, so this dashboard will be deleted. So what you have to do? File, save as Tableau publish. Okay. यहाँ पे आपकी Tableau पे आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी. For example, if you have not created your profile in your Tableau, this Tableau public, you have to create an account. As I have the account, just a minute, I need to check the password. Might be the password is अब हमें इसका नाम क्या सेव करना है? सेव dash save. This has been saved in my Tableau server. It has been saving. Wait. See, this is the dashboard of just we have created. See. Now you will see this is the profile. This kind of profile you can see. This many dashboard I have created, and this is the profile I can show. This is the profile you can put it in your CV, so that recruiter can immediately visit your Tableau public site and can able to access
what kind of dashboard you have created. So if you want to see here, if you say this one, you can able to, as I yesterday told you, that we cannot save this in the local machine directly. While once you have to upload it in the Tableau public, and then after you can download it from here in whatever format you want to download. If you want to download it in the Tableau workbook or the Power BI or Power PDF, in whatever format you want, you can download it from here only. So this मैम is, हम हाँ, फुल व्यू में देख सकते हैं, फुल व्यू फुल में, डिस्प्ले? हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। दिस इज द, नहीं, मैं पब्लिश करने के बाद। पब्लिश करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। नो, पब्लिश करने के बाद यू कैन सी इट लाइक दिस, ओके। क्योंकि पब्लिश अगर आप कर रहे हो तो वो तो आपका सेम ही है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे जिस प्रेजेंटेशन व्यू में दिख रहा है, दिस इज सेम विद द थिंग यू हैव बीन जस्ट अपलोडेड। अगर यहाँ पे भी मैम आपको, हाँ अगर अपडेट करना होगा तो मतलब मेरे नहीं, को वो पहले नहीं कर डाउनलोड सकते। करना पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू क्रिएट, डाउनलोड इट, यू हैव टू मेक चेंजेस एंड देन यू हैव टू अगेन अपलोड इट। यू कैन नॉट मेक चेंजेस हियर। तो दो दो फाइल बन जाएगा? हाँ हाँ हाँ, दैट इज दैट। इसीलिए जब तक आपका फाइनल वो ना हो जाए तब तक यहाँ पे अपलोड नहीं करते, ठीक है। So this is all about the basic about the Tableau. In the next class, in the next Friday, we will be again working with another data set, okay, जिसमें हम लोग डिफरेंट अलग तरीके की चीजें भी टैब्लू के बारे में देखेंगे। ये हमने बेसिक चीजें आज कवर की हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द चार्ट्स। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे वो थोड़ा इससे एडवांस रहेगा। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन गाइस टिल नाउ? नो व्हाटएवर मैम। वी हैव डिस्कस, सब चीज समझ में आई? मैम यस मेरे को मैप में थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर दो रीजन दिया हो, जैसे इंडिया भी दिया हो, यूएसए भी दिया हो, हाँ, तो मतलब कैसे शो कराना होगा? जैसे उसमें तो आप चेंज कर दिए, इंडिया से यूएस में चेंज हुआ था, तो अगर हाँ, दोनों दिखाना हो तो? आप एक बार में दोनों तो अपने मैप पे दिखाओगे नहीं, और अगर आपको दिखाना भी होगा तो आपका डेटा उसी हिसाब से लेगा। आप समझ रहे हो वो चीज, कि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक रीजन था, बट अगर हमारे पास दो रीजन होंगे तो वो हमें दो रीजन के हिसाब से चीजें दिखाएगा। तभी तो हम लोग जब इसे मर्जिंग करते हैं, डिफरेंट तरीके की फाइल एक साथ जोड़ते हैं, तो वो चीजें होती हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक था इसलिए हमें सिर्फ एक वहां पे दिख रहा था। ओके। या एनीथिंग एल्स गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस? लॉजिक जो आप कह रहे थे वो कब हाँ, पढ़ेंगे? वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब, वो थोड़ा एडवांस है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमने बेसिक जितने भी ग्राफ्स का है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, वो हमने वो देखे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगली हाँ, क्लास ये में। प्लीज मेक श्योर आफ्टर दिस क्लास और इवन द 5-6 days you guys are having, प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दिस चार्ट। अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ट डिस्कस करेंगे वो समझ नहीं आएगा। इसीलिए मेक श्योर कि आप वो प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना। मैं फाइल शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। Apart from this, guys, any confusion नो or मैम, anything clear? नो सब समझ में कंफ्यूजन। आया? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है गाइस, तो इन द नेक्स्ट क्लास हम फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज में। टैब्लू के एक क्लास और लूंगी बस मैं, जो नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू कवर द एडवांस पार्ट, कि क्या क्या उसमें हम कैसे लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड फिर हम पावर बीआई पे स्विच करेंगे। एंड पावर बीआई इससे भी ज्यादा इजियर है, तो उसमें वो और ज्यादा सिंपल रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है मैम गाइस, देन हाँ हाँ इसमें
इसमें इतना ही है मतलब इसमें क्या कहते हैं टैब्ल्यू में बस ये जो आप बता रहे हैं इतने ही कमांड काफी है? अभी हम एडवांस करेंगे ना पेपर, वो नेक्स्ट क्लास नहीं में करेंगे। मतलब हाँ इसमें और हाँ अगली में हाँ, जो भी जो भी मॉडिफिकेशंस है, जितनी भी मतलब चीज है। इसके लिए अलग से मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि इसके लिए अलग से कोई अलग से कहीं और से रिसोर्सेज तो नहीं बिल्कुल देखने ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ठीक। क्योंकि देखो, आप जितने भी टाइप्स के चार्ट बनाओगे, जितना बनाओगे आपको उतना आएगा, ठीक है। तो ट्राई टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब वीडियोस देखो, वहां पे जाके चीजें करो, ठीक है। बट ऑल द मॉडिफिकेशन, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा यू विल कम टू टैब्लू एंड पावर बीआई इज लाइक दैट। तो जितना चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट एग्जैक्टली, होगा। उतना हैंडी हो गया आप इस चीज में। ये तो पहले भी आपने शेयर किया है सुपर स्टोर कनाडा कल हाँ भी किया है शायद। हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ पे प्रेम के पास नहीं था, तो ये आस्क्ड मी टू शेयर द फाइल अगेन। मैम मैम ये कहाँ पे शेयर किया आपने? मैंने चैट में शेयर किया पर्सन। चैट पे यहाँ आई पे विल शो नहीं हो शेयर, रहा हमें। चैट शो नहीं हो रहा है। एंड एक चीज ये पूछनी थी आपसे कि जैसे एक्सेल है हाँ तो क्योंकि मेरा एक्चुअली विंडो जो है ना वो थोड़ा उसमें कुछ वो आ रही है तो मेरा एक्सेल एक्टिवेटेड नहीं है, थोड़ा एक्टिवेट विंडो करनी पड़ेगी, सेव नहीं हो रहा मतलब मेरा एक्सेल सेव नहीं हो रही ना फाइल, तो मैंने ओके। WPS एक्सेल, एक WPS का भी आता है लाइक माइक्रोसॉफ्ट का होता है, एक WPS का भी करेक्ट होता है, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। मैंने वो वाला कर लिया डाउनलोड, तो क्या उसमें भी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी? हाँ मतलब देखो, होता क्या है ना तपस, वो चाहे WPS का हो चाहे जो भी हो, जो हमारा फाइल फॉर्मेट है वो तो सेम ही है ना। हाँ फाइल फॉर्मेट तो एक्सेल रहेगा या CSV रहेगा, हाँ ठीक है। दोनों में तो सेम। आपको बस ये मेक श्योर करना है व्हाइल अपलोडिंग दैट फाइल, जो हमने हाँ टैबलो रिपोजिटरी के अंदर डेटा सोर्स का एक फोल्डर है, मेक श्योर हाँ कि फाइल वहां पे रखना, अदरवाइज अच्छा। आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्या डेटा मैं समझा नहीं मैम, फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं आप? टैबलो में जब हम लोग हाँ डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हाँ करने के जी बाद जी। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम जाते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद टैबलो रिपोजिटरी करके आएगा आपका फोल्डर, ओके। ओपन दैट फोल्डर, वहां पे डेटा सोर्स करके एक फोल्डर आएगा, उस फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल सेव करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं जब तो आप इंपोर्ट करते टाइम मैं डायरेक्टली लोकेशन से इंपोर्ट कर दूंगा तो ये मतलब सपोज मैं मैंने आपको मैंने दिखाती मान हूँ, मैं दिखा अच्छा रही हूँ, एक सेकंड। तब इस ब्रो एक्चुअली मैम बोल रहा है। See, हेलो। this is the part. If you will see here, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम इस पे जाएंगे, ये हम्म दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम्म ठीक है। आप यहाँ के अलावा कैसे भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपने ये किया, और फिर ये फाइल हम्म। यहाँ पे आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे क्या है, तो माई टैब्लो रिपोजिटरी एंड रिटर्न सोर्स, आप यहीं से बस इसको ओपन कर सकते हो। अगर मैंने डी ड्राइव में सेव करा और इस लोकेशन से मैं डी डी ड्राइव से उठाऊंगा तो फिर कोई इसमें चेंज आएगा मतलब जैसे आएगा ही मान लो नहीं, आप ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि वो फोल्डर ही यहीं पे चूज कर रहा है, डायरेक्टली यहीं पे रिडायरेक्ट ही होगा वो। ये टैबल्यू का है, क्योंकि एसक्यूएल में तो कहीं से भी उठा देते थे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस पीसी अगर में जाना एक बार, आप दिस पीसी में जाना, दिस पीसी में अब डी में जाना, डी में, डी नहीं सी है तो सी में जा रहे हैं आप, डी में जाना और यहाँ पे कोई भी फोल्डर होगा आपका उठाना। चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स गिव देम एक सेकंड, वो क्लियर हो जाता है, मतलब किचन जो है तो ओके लेट्स, हाँ हो रहा है तब, यस। इन द डी ड्राइव आल्सो यू कैन डू इट, ये तो मैं क्या, हाँ ठीक है। हाँ यू कैन डू इट। तो यही चीज है, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा यू विल कम टू नो अबाउट इट। मैम 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 एक्चुअली एक इशू था मैम। मैं घर में जैसे पिछले जो क्लास थी वो 5-6 क्लास मेरा मिस हो गया था, क्योंकि वो ग्रैंड मदर का डेथ हो गया था घर पे। ओके, वो मैम वो ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, वो कवर तो हो जाएगा नहीं ना? नहीं, अगर आप टैबल्यू की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो या रेस्ट ऑफ द जो हमने सेक्शंस नहीं कवर नहीं किए, टैबलू टैबल्यू आज हाँ नहीं टैब चल, टैब आज मेन था।
ठीक है। टैबलू से पहले मैम, टैबलू से पहले पहले का 5-6 क्लास मेरा मिस हो गया था। अच्छा, तो टैबलो से पहले तो प्रदीप हमने ना पावर ये पाइथन और एसक्यूएल कवर किया है, तो इतना आपको जी जी। मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इतना कुछ टफ नहीं है पाइथन और एसक्यूएल भी। आप बस क्या बोलते ओके हैं, जो भी वीडियोस है आप उसको गो थ्रू करो। ठीक है, उसके अलावा अगर ओके कहीं दिक्कत आती है तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके ओके श्योर। या एनीथिंग एल्स गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस? Yes, ma'am, I do have a doubt here. या नो? Ma'am, in Tableau, you have shown the map wala stuff, right? हाँ So in the map में after clicking on the map menu, we are editing the location there, right? करेक्ट। So when we are editing the location, at that time we are selecting the country or region, and there we are selecting. I mean, we have selected the fixed where United States we have hard coded selected there. But there is an option called from field, and the from field option will give us a this thing. I think so that it will give us whatever the field data is containing, that particular map will be mapped with the that particular data will be get mapped with the our this particular map, isn't it? हाँ एग्जैक्टली। So so if I specifically change my data to like country India, and then states like our states like Maharashtra and Gujarat and other things, then in that case this will map to that particular एग्जैक्टली हाँ, map, and it will जितना भी आप show मैनुअली both the उसमें regions, जाओगे right? वो आपको उतना ज्यादा इंटेंसिफाई करके दिखाएगा जितना भी आप Right. डेप्थ में जाओगे। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे दोनों रीजन्स दिखेंगे ना, मुझे यूनाइटेड स्टेट का भी डेटा दिखेगा और मुझे इंडिया का भी डेटा दिखेगा, राइट? हाँ डेफिनेटली दिखेगा। वही दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, टोल्ड टू फजील और समवन हु हैज आस्क्ड अबाउट हाँ दिस, हाँ। दैट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास दो डेटा है, मतलब दो कंट्रीज हैं, ठीक है, दो ठीक है, रीजन है, तो उस तो केस मैम में हाँ हाँ। आई गॉट द स्टफ, सो दिस इज जस्ट फॉर कंफर्मेशन। अभी मुझे ये बताओ मैम कि उसमें वो हाउ इट विल आइडेंटिफाई बाय नेम, कि अभी लेट्स अज्यूम करो कि एक सिटी है मुंबई, तो हाँ मैंने मुंबई में डेटा में लिखा है MUMBAI करके, नहीं, वो बट आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो आपको मतलब वो क्लीन, डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा तभी एग्जैक्टली जाके वो मुंबई हाँ, जो है वो मुंबई के साथ वो मैप करेगा, राइट? उसका एग्जैक्टली इंटरनल जो एग्जैक्टली कुछ भी हाँ, स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। एग्जैक्टली दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा क्लीनिंग। तो अगर मुझे अगर मेरे सिटी का अगर नेम मैच नहीं हो रहा है तो दैट डेटा विल नॉट नहीं बी उठाएगा। रिफ्लेक्टिंग। हाँ नहीं उठाएगा। ओ, ओके। और फॉर उसका एग्जाम्पल कुछ हुई। फिल्टर होके मुझे मिलेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा इतना है और मेरे मैप में इतना ही डेटा दिख रहा है करके, कुछ ऑप्शन है जहाँ पे मुझे ये फाइंड आउट कर पाऊँ मैं कि अगर मेरा सिटी नेम मैच नहीं हो रहा है तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अगर। आप नहीं कर सकते विनोद, इन दिस मैप। ओके, वो हाँ होता है डेटा क्लीनिंग का पार्ट। जब आप डेटा क्लीन कर रहे होगे ना, आपको हाँ उसी समय वो दिखाई दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बार चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, हाँ आपने यहाँ पे कंट्री डाला या आपने स्टेट डाला, हाँ। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे बाइफरकेशन आएगा, आप उसी समय समझ जाओगे कि यहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा है। यू हैव टू क्लीन इट, यू हैव टू रिप्लेस इट। अच्छा, ओके। ठीक है, तो मुझे आप वैलिडेट करके ही फिर बाद में डेटा वैलिडेट एग्जैक्टली करके ही देखना है। हाँ, वही वही। गॉट ठीक इट है, मैम, थैंक यू। या अगर आप इसमें आओगे देयर की yeah, here you will see all the charts we have created. अगर आप किसी एक चार्ट को लेके आपने जाके टैब्लू टैब्लू पब्लिक पे उसको वो कर दिया, अपलोड कर दिया, तो मेक हम्म। श्योर आपका सिर्फ एक चार्ट अपलोड हो रहा है। अगर आप डैशबोर्ड अपलोड कर रहे हो तो ही ओनली डैशबोर्ड अपलोड हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप कोई चार्ट पे जाके चार्ट अपलोड मत करना, डैशबोर्ड पे जाके ओके। डैशबोर्ड अपलोड करना। क्योंकि वहां पे अगर आप चार्ट अपलोड करोगे एंड बाय थिंकिंग कि हमने चार्ट अपलोड किया है बट हमारा डैशबोर्ड भी विजिबल होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैम ये डैशबोर्ड में हम लोग लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं क्या मेरे हर एक चार्ट के लिए? वो होता है बेसिकली नेविगेशन। ठीक है, अगर अच्छा। आप नेविगेशन यहाँ पे रखोगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे गए नेविगेशन के लिए, हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया, और हमने
यहाँ पे देखिए इतने सारे डैशबोर्ड है। फॉर Right, एग्जाम्पल right, हमने right. ग्रुप्ड बार चार्ट से नेविगेट करना है, हमने अप्लाई किया एंड हमने ओके कर दिया। ठीक, अब हम इसको ये करेंगे ग्रुप बार चार्ट। मैम कंट्रोल करके दबाना पड़ेगा। ओके या ठीक, इट विल विनोद हमने किया था ना कि कंट्रोल करके ही हाँ किया था। वो पावर बीआई में किया था रे, इधर थोड़ी। टैब्ल्यू में नहीं था ना, वो पावर बीआई का था। और नेविगेट लिखा है ना, अल्ट प्लस क्लिक। हाँ ओके, और के साथ होगा। ओके या you see here और click see, this is the ओके hierarchy ओके chart। ओके, तो राइट। वो लिंक हम ऐसे कर सकते हैं, तो जैसे आप राइट यहाँ मैम, अभी ये डैशबोर्ड को अगर मैं पब्लिश कर दूं तो हाँ नेविगेशन बटन में अगर मैं क्लिक करूं तो मेरा तो वो हायरार्की हाँ चार्ट हाँ में चला हाँ जाएगा। हाँ तो मुझे हाँ हाँ, हायरार्की चार्ट भी पब्लिश करना पड़ेगा। नहीं आप ये करोगे ना, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए ये था सी, यहाँ पे अगर आप ये करोगे व्यू ऑन टैब्लू पब्लिक, तो ये है ये पूरा। अगर यहाँ पे हमने वो अपलोड किया नहीं है अभी तक, let's see if we can delete it. No, we cannot delete it. वैसे तो विनोद हो सकता है वो चीज जो आप बोल रहे हो, हाँ, वो मतलब मुझे होती है। दोनों अपलोड करना हाँ, पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कर लेना, वो होता है वैसे जब तक, इसीलिए यहाँ पे नेविगेशन बटन होता है कि राइट, बेसिकली जब आप किसी देखता हूँ मैम, इस पे प्रेजेंटेशन में हो, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी बनाया, ठीक है, आपने राइट, स्टोरी क्रिएट किया और आपने यहाँ से लिंक कर दिया कि आपने यहाँ पे जैसे बटन दबाया वो स्टोरी वाले पेज पे आपको कनेक्ट कर देगा। तो दिस इज ऑल द एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। और उसके अलावा कहीं कुछ ऐसा होता है देन विल डिस्कस। ओके, इन द नेक्स्ट ओके क्लास हम मैम। इसके एडवांस लेवल पे जाते हैं कि क्या क्या लॉजिक हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट मैम, ग्रेट सेशन, थैंक यू। ओके ओके, एनीवन एल्स गाइस? लेट्स सी वन थिंग। ठीक, हमने ये बनाया था, इसने बस इसको क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया है। ठीक, ये किया हमने। विनोद हो रहा है ये, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। या ये चीज हो रहा है, हमने वो नेविगेट किया और वो हमारा इधर आ गया। राइट मैम, अब ये बैक नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है मैम, यहाँ पे हम लोग और एक नेविगेशन डाल के वहाँ पे एग्जैक्टली, बैक हाँ ले हमें सकते यहाँ हैं, पे एक इट्स नॉट अ बिग डील। नेविगेशन डालना पड़ेगा। राइट राइट राइट। और एक चीज और इसमें है कि अगर आपने इसको ओवरराइट कर दिया तो वो उसके जगह पर ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से सी द अनदर डैशबोर्ड हैज बीन अपलोडेड एंड वो बेसिकली आपको ओवरराइट कर दिया, उसमें जो आपका इस नाम से सेव था उसकी जगह अब ये वाला आ गया। तो बट आप इस पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यू हैव टू डाउनलोड इट and make changes and then after upload it or rewrite the thing. Okay, मैम, और इसमें पब्लिश करने के बाद मैम हम लोग फिल्टर्स डाल सकते हैं क्या इसमें? नहीं वही मैंने बोला, कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकते। ओके। आप क्या कर रहे हो, जैसे आपका ये है, मैंने वो क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है, राइट एज अ राइट। टैब्लू वर्कबुक आपने डाउनलोड किया। आपने टैब्लू में जाके उसे ओपन किया, जो भी चेंजेस करने हैं आपने किया उसमें, और आपको फिर से उसको बस अपलोड कर देना है। ओके ओके। बट ठीक है, मैम पावर बीआई में तो हम लोग वो फिल्टर्स हाँ डाल के वो कर कर सकते देते हैं हैं, ना? तभी तो पावर बीआई को ज्यादा वो ओ सूटेबल माना जाता है ओके इसके लिए। ओके। ठीक है, okay guys, then let's connect in the next class, the next Friday, and we'll try to cover up or wind up with the Tableau. And by Saturday we'll try to start the Power BI. Okay guys, thank you so much. वेलकम। Okay, thank you. Okay, थैंक यू मैम, बाय। bye. Bye.